Welcome students. Today we start our topic uniform, non-uniform motion. After that we'll discuss about speed, velocity and acceleration. Before we go with our topic, in the previous lecture we were discussing about motion, distance, displacement, vector, scalar and the few part of uniform and non-uniform motion. So if you're having any doubt, you can comment me in the comment section. So we go through with our chapter today. So again we'll discuss about uniform and non-uniform motion. So as we know, in previous lecture I said that a uniform motion, a motion in which a body travels equal distance in equal interval of time. Here you can see that this is a graph of uniform motion. This is a distance time graph of uniform motion. This is time in second and this is the distance in meter. So let's consider a body travel 1 meter in 1 minute. 1 meter in 1 minute. And this is a uniform motion. So in another 1 minute, body should be travel 1 meter more. So here you can see the body can travel 1 meter in 1 minute. In second 1 meter, again it travel 1 meter. In third 1 minute, it again travel 1 meter. In fourth minute, it again travel 1 minute. So you can see gradually time is increasing, at the same rate the distance is increasing. So this is called uniform motion. When you draw the graph, you will get this straight line. This is called slope. This is called also slope. We will study in later on. This is also called as slope. So I think you understand the uniform motion. Now, non-uniform motion. So for non-uniform motion, we can say, I am just stating the definition. When a body travel unequal distance in equal interval of time. समझ में नहीं आया. Let's see here. First, I am just giving you example. Example देखते हैं. Let's consider you are going on a GT road. आप एक स्ट्रीट पे जा रहे हो या GT रोड पे जा रहे हो, स्कूटी या कार से. आपने पहले 1 आवर में या पहले मिनट में आपने बहुत स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपने कुछ ट्रेवल किया. आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 आवर में, मान लो 50 किलोमीटर. 1 आवर में कितना किया? 50 किलोमीटर. आगे रस है, आपने सेकेंड 1 आवर में आपने ट्रेवल किया टोटल 30 किलोमीटर. पहले आपने कितना किया? फर्स्ट आवर में आपने कितना किया? 50 किलोमीटर. सेकेंड आवर में कितना किया? फिर मीन सेकेंड आवर में 1 मोर आवर. इसमें कितना किया आपने? 30 किलोमीटर. थर्ड आवर में आपने ट्रेवल किया 20 किलोमीटर. फोर्थ आवर में फिर आपने कितना ट्रेवल कर लिया? 60 किलोमीटर. सो यू कैन सी हियर कि टाइम फिक्स है हर 1 आवर पे. टाइम कितना है? 1 आवर. टोटल 4 आवर हो गया. टोटल 4 आवर हो गया. डिस्टेंस आप कैसे ट्रेवल कर रहे हो? पहले 1 आवर में 50, देन 30, देन 20, फिर 60. ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है. अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा इसका. इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मींस इसका जो फॉर्म है वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है. ये चेंज हो रहा है बार बार. इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसका दूसरा नाम भी हम बोलते हैं, इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं. हम अभी एक्सेलरेशन के बारे में इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे. इसका दूसरा नाम भी हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन. व्हाट वी से? एक्सेलरेटेड मोशन. यहां पे एक्सेलरेशन मींस ये नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज ही होगा, ये भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, रिटार्डेशन उसको बोलते हैं. लेकिन कॉमनली व्हाट वी से? एक्सेलरेटेड मोशन. सो इट्स ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ
In motion, by motion we can define three terms: speed, velocity and acceleration. These three terms can be explained by the help of motion. If a body having motion, we can say that it having speed or velocity, or what is the acceleration of the body. So three term can be defined by the motion. So one by one we can discuss the topic. First of all, we will discuss about speed, that what is speed. Now speed, देखिए इन कॉमन टर्म में ना हम बहुत टाइम यूज करते हैं कि देखो गाड़ी कितने स्पीड चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है, मीन्स कितना स्लो चल रहा है, स्लो स्पीड है, फास्ट स्पीड है, ठीक है. तो हाउ वी कैन डिफाइन ये स्पीड है क्या, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये स्लो चल रहा है और ये फास्ट चल रहा है. तो स्लो स्पीड और फास्ट स्पीड हम कैसे डिफाइन करते हैं इस चीज को समझिए. स्पीड एक्चुअली में क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम के रिस्पेक्ट में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम स्पीड बोलते हैं. अगर हम डिफाइन करें इसको, इस चीज को समझते हैं हम. मान लीजिए लेट्स कंसीडर दैट दिस इज A person and this is a B person. स्पीड को समझते हैं. ये एक पर्सन A है, ये एक पर्सन B है. A को यहां से यहां तक आना है, ये C पॉइंट है और ये X पॉइंट है, ये X पॉइंट है, ये Y पॉइंट है. इसका डिस्टेंस यहां A से X का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, B से Y का डिस्टेंस 10 किलोमीटर. नाउ अब क्या हुआ, A X तक आने में 5 आवर लेता है. कितना टाइम लेता है? 5 आवर. B Y तक आने में 3 आवर लेता है. अब हमें यह दिखाना है कि कौन स्लो है, कौन फास्ट है, कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा है, कौन स्लो स्पीड से चल रहा है. मीन्स which one is faster and which is slower. इस चीज को हम देखने के लिए देखते हैं, इसने A ने B तक 10 किलोमीटर आने में कितना टाइम ले रहा है? 5 आवर. मीन्स और ये कितना टाइम ले रहा है? 3 आवर्स. दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये टाइम ज्यादा ले रहा है, ये टाइम कम ले रहा है. जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे वो क्या हो गया? फास्ट. जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे वो क्या हो गया? फास्ट. लेकिन जो ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करे वो क्या है? स्लो. यहां पे क्या है? दोनों का डिस्टेंस सेम है बट टाइम कौन ज्यादा ले रहा है? A. सो A इज स्लोअर और B फास्टर. आई थिंक यू गेट द पॉइंट. आप समझ गए होंगे. वन मोर एग्जाम्पल स्लो एंड फास्ट का. आप देखते होंगे एक पर्सन. नाउ वी सी द डेफिनेशन ऑफ स्पीड. डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. और एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन. डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम कॉल्ड एज स्पीड. समझे? Do you understand? Now again I repeat. How we can say? यहां पे दो वर्ड है, देखना. फर्स्ट वर्ड है डिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंड वर्ड है पर यूनिट, मीन टाइम. अगर हमें स्पीड को लिखना हो मैथमेटिकली, हम कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं. स्पीड इक्वल टू distance travel upon per unit upon time taken. What I said about the speed, that distance travel upon time taken to cover that distance, time taken to cover that distance.
I think you know it. So if you write it symbolically, then speed is denoted by v, distance is denoted by s, time is denoted by t. So v is equal to s upon t. V equal to s upon t. So what is speed? Speed is defined as distance travel per unit time called as speed. I think you got it. Now, अब न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं इस पे? देखो आपके पास तीन वैल्यू, इस फॉर्मूला में क्या क्या नीड है आपको? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. बिफोर वी गो टू द न्यूमेरिकल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? इसका एसआई यूनिट हम कैसे निकालेंगे? लेट्स सी. You know that SI unit of SI unit. We'll calculate the SI unit. V. Distance का SI unit. S is denoted by distance. For distance. S का SI unit क्या होता है? Distance का मीटर. Time का SI unit क्या होता है? सेकेंड. तो स्पीड का SI unit क्या हो गया? Speed meter per second or meter per second. You can write it down as. So what is the SI unit of speed? Meter per second. So I think you clear. You don't have any doubt about this topic. Again I repeat, for numerical purpose, you in question either these three value you need to calculate the value. For numerical purpose, you need at least two value to calculate the distance, time or speed. अगर आपको कोई दो वैल्यू पता है तो आप आराम से स्पीड, अगर आपको डिस्टेंस टाइम पता है तो आप स्पीड निकाल लोगे. अगर टाइम और डिस्टेंस, टाइम और स्पीड पता है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो. डिस्टेंस और स्पीड पता है तो आप उससे टाइम निकाल सकते हो. टाइम और स्पीड पता है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो. तो ये है, हम निकाल सकते हैं. अभी हम लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. Next topic is uniform and non-uniform speed. We'll discuss about now what is uniform and non-uniform speed. Again, the same word क्या है again? Uniform. And दूसरा क्या है? Non-uniform. First word is uniform. Uniform speed and non-uniform speed. You already know that uniform means equal, non-uniform is not equal. So uniform speed means when a body, when a body travel equal distance in equal interval of time called as यूनिफॉर्म स्पीड. बोलो सर ऐसा आपने यूनिफॉर्म मोशन में भी बोला था. यस, यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. सो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड. Now we'll discuss about uniform speed and non-uniform speed. Again, for uniform, you know that uniform means equal, form means position. Non-uniform means unequal position. So uniform speed means when a body travel equal distance in equal interval of time called uniform
speed. When in body travel equal distance in equal interval of time called as uniform speed. So now you can think, आप ये भी सोच सकते हो कि यूनिफॉर्म स्पीड को तो हम ऐसा ही कुछ यूनिफॉर्म मोशन नहीं पढ़े थे. यस एग्जैक्टली, यूनिफॉर्म स्पीड को हम यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं. सी नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. कुछ एग्जांपल पहले देख ले यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड का. लाइक अर्थ रिवॉल्विंग इन इट्स ओन एक्सिस, अर्थ rotating on its axis, earth revolving around the sun, earth revolving around the sun, earth rotating on its own axis, a ball is moving in a circular path. These all are the example of uniform speed. Now अगर आप ड्रॉ करोगे ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का, फिर आपको कुछ इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा. यहां टाइम, यहां डिस्टेंस, कुछ इस टाइप आपका स्लोप मिलेगा, इस टाइप का स्लोप मिलेगा आपको. नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगेन व्हेन इन बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो लेकिन टाइम क्या हो, फिक्स हो, इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. जस्ट लेट्स सी, हम ऐसे ही देखे थे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में. दोनों में सिमिलरिटी है. मैं आपको पहले बताया था कि मोशन के दौरान आप तीन चीज को डिफाइन कर सकते हो, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे इस चीज को. आई थिंक यू क्लियर अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अगेन इसका नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ देख ले एक बार. इफ यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम. यू विल गेट लाइक दिस, और यू कैन ऑल्सो गेट, ये आपको इस टाइप का मिल सकता है. अगर इस टाइप का नहीं मिला, आपको कभी कुछ इस टाइप का भी मिल सकता है नॉन यूनिफॉर्म का. ठीक है. नाउ बहुत डिफरेंट टाइप के हमें ग्राफ मिल सकते हैं. अनइक्वल, एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा हमें, बस ये याद रखना. सो आई थिंक यू क्लियर अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ विल डिस्कस अबाउट, तो अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा, तो हम अगर यहां तो हम यूनिफॉर्म आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म को कैसे कैलकुलेट किया जाए. नॉन यूनिफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है. हमें क्या निकालना पड़ता है, एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम फिर से एक बार डिफाइन करते हैं. लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने फर्स्ट 5 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट किया. नेक्स्ट 5 किलोमीटर आपने 2 आवर में कंप्लीट किया. नेक्स्ट 5 किलोमीटर आपने 1/2 आवर में कंप्लीट किया. नेक्स्ट 5 किलोमीटर आपने 1.5 किलोमीटर में कंप्लीट, 1.5 आवर में कंप्लीट किया. नाउ मैंने आपसे पूछा कि विद इन द 20 किलोमीटर जर्नी, ये जो आपका जर्नी है, इस जर्नी में आपका स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड क्या था, या स्पीड क्या था. जब मैंने बोला स्पीड, तो मैं नहीं निकाल सकता सिर्फ, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज स्पीड. आपने स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन. अब यहां पे देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, दिस टोटल डिस्टेंस. तो आपके स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू v इक्वल टू एस अपॉन टी. एस का टोटल डिस्टेंस 5 + 5 + 5 इन किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 1 आवर प्लस 2 आवर, 3 आवर प्लस 3.5 and 5 hours. So what you will get? 20 kilometer upon 5 hour. And what you will get then? V equal to 4 kilometer per hour. So your average speed is 4 kilometer per hour. So what is average speed? Total distance
covered by an object upon total time taken. So formula for average speed is total distance travel upon total time taken. आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसे ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, वो आपको क्या बताएगा? एवरेज स्पीड. वन मोर थिंग, हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था. यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम है कांस्टेंट स्पीड. हम उसको कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं. आई थिंक यू हैव क्लियर द डाउट्स ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. Now, what is the SI unit of speed? I already told you, meter per second. Now, you having a question that how we can calculate and by which instrument we can calculate the distance and speed. In vehicles, कार में या किसी भी अदर व्हीकल में स्पीड को और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं. आप देखेंगे मोस्टली कार में कुछ राउंड टाइप में, आप तो डिजिटल हो गया, डिजिटल भी हो गया, राउंड टाइप में यहां पे लाइक लेट्स 10 0 20 30 50 80 100 140 लाइक दिस, ऐसे लिखे होते हैं. यहां पे एक निडल जैसा होता है, निडल जैसा होता है. इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं आपके कार में या डिजिटल जो आपके स्पीड दिखाता है, उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर. अ इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन कैलकुलेट द स्पीड, we can find the speed called as speedometer. Next one, जो कि आपको डिस्टेंस बताता है कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुका है, उसको बोलते हैं हम ऑडोमीटर. क्या बोलते हैं उसे हम? ऑडोमीटर. So odometer is a device by which we can find the distance traveled by the vehicle. टोटल डिस्टेंस ने कितना ट्रेवल किया अभी तक, किसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं? ऑडोमीटर द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करते हैं. स्पीडोमीटर द्वारा हम क्या करते हैं? कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया. आई थिंक यू गॉट इट. नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज velocity. Now we'll discuss the velocity. So before we discuss the velocity, we just recapitulate the speed. What was speed? Distance travel per unit time called as speed. But if you need to define, or if you are defining velocity means when a distance travel in a specific direction per unit time called as velocity. Here we can see, like I'm going from A to B. Here this one A to B, this is displacement because direction is fixed. But when you are going from this path like ACB, what you are doing? The direction is not fixed. ACBD. Here the direction is in downward. Again it's another direction. Again the direction is gradually changing. But here the direction is fixed. So when a body travel a distance in a specific direction with respect to time called as velocity. So, or we can say or the displacement per unit time called as velocity. The displacement per unit time called as displacement velocity. So what is velocity? The distance traveled per unit time in a specific direction called as velocity, or displacement
per unit time called as velocity. So these two definitions both are same. Either you can say the distance per unit time in a specific direction is velocity, or displacement per unit time called as velocity, or speed in a specific direction called as velocity. Speed in a specific direction called as velocity. So you can write it down any one of them. So if you let me see the velocity in formula. Velocity equal to distance traveled in a given direction upon time taken. What is velocity? What I said in the definition, the rate of change in distance in a specific direction with respect to time, called as velocity. Same, I just write it down in a numerical form, in a formula form. Now we can also say the velocity equal to displacement upon time, or in symbolically we can write V equal to S upon T. Now we have a question, why you put arrow on the V or on the S? Because here velocity means velocity is also speed. Velocity is also a speed, which in what kind of speed? A speed in a specific direction. A speed in a specific direction. And here the distance. I'm talking about the distance, that distance which is in a specific direction. So both having magnitude as well as direction. It is a vector quantity. What is velocity? Velocity is a vector quantity because it having magnitude as well as direction. And if you're talking about speed having only magnitude, so it is scalar quantity. So again I say, what is this velocity? Displacement per unit time or distance in a specific direction per unit time called as velocity. Now there is some comparison between speed and velocity. Speed is the rate of change in distance with respect to time called as speed. The SI unit of speed is meter per second and it is a scalar quantity. Example, the car is moving on a street. Now velocity, the rate of change in displacement with respect to time called as velocity. It is a vector quantity. It is a vector quantity. And the SI unit of velocity is also meter per second, because meter upon second. Velocity can be zero because velocity is depend upon displacement. Velocity is depend upon displacement, but speed is depend upon distance. So distance cannot be zero, but displacement can be zero. So if displacement can be zero, then it means velocity can be zero. So velocity can negative, positive or zero, but speed is always positive. Again I repeat the differences between velocity and speed. Speed, the distance per unit time called as speed. There is no need of direction for speed. But velocity, the rate of change in displacement with respect to time called as velocity. Velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity. Speed depend upon distance, velocity depend upon displacement. Speed never be negative, it is always positive, but velocity can be zero, negative or positive. These five are difference between speed and velocity. Now we'll switch to the next topic. It's uniform velocity, non-uniform velocity and average velocity. Again, uniform velocity means when a body travel equal distance in equal interval of time in a specific direction. So in the speed, uniform speed, I was just talking about distance and time. But here in uniform velocity, you need to say the specific word, which is you have to define the direction.
that in which direction, because velocity having a specific direction. So uniform velocity, when a body travel equal distance in an equal interval of time in a specific direction, called as uniform velocity. But in non-uniform velocity, when a body travel unequal distance in equal interval of time in a specific direction, called as non-uniform velocity. Uniform velocity is also called as constant velocity. Uniform velocity is also called as constant velocity. But for non-uniform, now we are having so many doubts that how we can calculate the non-uniform velocity. For non-uniform velocity, we need to find out the average velocity. So what is average velocity? Average velocity means equal to initial velocity plus final velocity upon 2. Here average velocity. So how you can calculate the average velocity and why we need average velocity? To calculate the non-uniform velocity, we need average velocity. So here we need two terms, initial velocity and final velocity. So average speed is always positive. It can't be zero, it can't be negative. But average velocity is maybe zero, positive or negative.